जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान. Happy New Year to everybody. It's a calendar new year, and a lot of resolutions must have been made, and I am sure we have had enough time to reflect on the past year also. क्या हमने थोड़ा रिफ्लेक्शन किया? एंड यस, ठाकुर जी का बहुत 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 आभार और धन्यवाद. He has been so kind to us. We had a beautiful last year, a lovely life so far. He has been protecting us, and He has given us more than we can ever comprehend or ask. है ना? तो हमें उनको शत शत नमन करना चाहिए, प्रभु को, for taking care of us. And कहते हैं ना, जब वो आपको लेके आए हैं इस संसार में, तो आपका ध्यान रखने की जिम्मेवारी तो लेंगे ही ना. तो and that is what He has done. And God always has enough for everybody's need. Greed का पता नहीं, right? And maybe this new year, the thought that came is that no matter how old or young we are, we should have goals. We are never too old have said to say कि बस अब हो गया, अब क्या, right? हम लोग अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं. The younger ones, of course, and the mid-aged also, and the older also. I think till we have breath, जब तक हमारे कंठों में श्वास है, तब तक हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं. And कहते हैं ना, we should engage every minute in productive activity, productive work, which benefits others more than it benefits us. Right? तो हमें सोचना चाहिए, बैठना चाहिए. हम इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, क्या हम क्षण क्षण को सही तरह से, क्षण क्षण का सही तरह से उपयोग कर रहे हैं क्या? ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है. It is like after how many births, like lakhs of births, we get one Manushya Jeevan. And it is never too late to get up and realize it and make it worth it. So, prayers to God कि may He grant us the opportunity to serve. Because अगर प्रभु की इच्छा ना हो तो हम जेब में पैसे लेके भी चलेंगे ना, कोई देने के लिए मिलेगा नहीं, राइट? तो सेवा भी प्रभु की इच्छा से ही हो सकती है. तो आज हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं इन दिस फर्स्ट क्लास ऑफ द ईयर कि प्रभु गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, मेक अस अ वेसल, मेक अस अ मीडियम, गिव अस दैट भाव कि हम सेवा करें, है ना? जो हमारे सामने आए, पशु पक्षी मनुष्य, उसकी सेवा करें. तन मन धन से हम सेवा करें. मेक अस योर वेसल, मेक अस द चैनल, कि हमारे हाथ से सुकर्म हुए, राइट? क्योंकि आपकी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं कर सकते हम. तो लेट्स प्रे कि आप हमें निमित्त बनाइए कि हम सुकर्म कर सकें. एंड विथ दिस थॉट, लेट्स स्लोली reopen the Granth. And the thought, the story that has been going through my mind since morning, and it is a reminder, a lesson for me, कि no matter what, इतने समय के लिए ग्रंथ बंद नहीं होने चाहिए. So that is something that I have learned, कि no matter what you are doing, no matter where you are, ग्रंथ खुले रहने चाहिए. Because ये जो ग्रंथ है ना, आपको सुदिशा देते हैं, माया में उलझने नहीं देते हैं, राइट? और हम सोचे कि चलो ठीक है, 2-3 हफ्ते उलझ जाते हैं, फिर वापस माया से निकलने में कष्ट होता है, राइट? सो दिस इज अ वेरी बिग लेसन दैट आई हैव लर्न कि ग्रंथ कभी बंद नहीं होने चाहिए. हम कहते हैं ना, जिस हाल में हैं, जहां हैं, वहां राम 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 करते ही रहें. दैट शुड बी आवर आधार. So there was this, and I must have narrated the story many times, but there was this
डिसाइपल, सत्संगी, एंड उनको लगा कि अरे हमेशा इतने सालों से सत्संग करता आया हूं, राइट? तो अब तो मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग. बार बार जाते हैं सेशन में, बार बार वही चीज होती है. गीता भी घूम घूम के बहुत बार पढ़ ली, रामायण भी घूम घूम के बहुत बार पढ़ ली, भजगोविंदम भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और सारे ग्रंथ अल्टीमेटली बोलते तो एक ही चीज है. तो अब तो मुझे समझ आ गया, मुझे पता चल गया, तो अब मैं बार बार सत्संग में क्यों जाऊं? कभी इस सत्संग में जाता हूँ, कभी उस सत्संग में जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ, घूम फिर के बात तो वही कह जाते हैं सब. So it's the same thing they are saying in different forms. So I don't need to go to satsangs anymore. So he sat down in his house. And then his guru found out about it. Ki now this satsangi who has been part of the satsang for so many years has decided not to be a part of it anymore, stating that he knows everything and it is just a repetition. So that guru went to his house. And he sat next to him. कहते हैं ना, शब्द तो काम में लेने पड़ते हैं, बाकी these words are futile. It is the actions, it is the deeds, it is the aura that speaks so much. अगर possible होता, जैसे रमन्ना महर्षि, he was a man of few words. Most gurus don't indulge in talking at all. The minute you enter into that aura, all the questions are answered. So ये पहुंचे, बैठ गए. He offered whatever he could to his guru. He sat down. There was a fire burning there. तो गुरुजी ने क्या करा? He took out that piece of wood or coal outside the fire and put it outside the fireplace. After a while, वो जो लौ थी on the piece of fire or on the piece of coal, वो बुझ गई. It went off. थोड़ी देर और बाहर रखा तो वो ठंडी हो गई, राइट? इट बिकेम कोल्ड. एंड दे वर बोथ वॉचिंग, दे वर नॉट टॉकिंग, दे वर जस्ट वॉचिंग, दे वर लुकिंग एट इट. एंड बिफोर लीविंग, द गुरु पुट इट बैक इन टू द फायर. एंड द मिनट इट वेंट बैक इन टू द फायर, दैट पीस ऑफ वुड और कोल, वट एवर योर इमेजिनेशन इज टेलिंग यू इट इज, इट कॉट फायर अगैन. इट स्टार्टेड बर्निंग. वो गर्म हो गई. संग की ताकत, सत्संग की ताकत, ग्रंथों की ताकत. सो द बिगेस्ट लेसन इज, नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर वॉट यू आर डूइंग, ग्रंथ बंद नहीं होने चाहिए. सो जस्ट शेयरिंग अ लर्निंग, एंड विद दिस वी एंटर श्री रामचरितमानस. एंड वी ऑल नो कि ये भी गुरु हैं. रामचरितमानस एंड महाभारत. रामचरितमानस में अभी वी आर डूइंग विभीषण गीता. फ्रॉम महाभारत वी आर लर्निंग द गीता, राइट? वो कृष्ण ने बोली, ये श्री राम ने बोली. कृष्ण ने बोली क्योंकि द्वापर में बोली, उनने समझ थोड़ी कम हो गई थी तो उनको थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ा. यहां इनने त्रेता में बोली, समझ थोड़ी ज्यादा थी, थोड़े में ही काम हो गया, राइट? So only one paragraph, and Ramji was a man of few words. And his journey, again, a reminder why Ram, Ram, Ram all the time. Because his life was not a very easy existence. The ordeals he faced were something that we cannot even comprehend and imagine. And the resources he had were negligible, right? Because of his vrat, he never sought help from any kingdom. And his kingdom also. ऐसा नहीं है कि the news must not have gone to Ayodhya or the news must not have gone to Janakpuri कि माँ सीता has been captured. But सबको अपने मर्यादाएं पता थी, दायरे पता थे. त्रेता युग में शब्दों की कीमत थी. When we made a promise, we kept a promise. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए. तो to be very careful when we are speaking. We cannot just randomly speak, because once we have uttered, no matter how trivial that utterance could be, maybe it must be a joke, but you have to uphold it. So when the promise was made, no matter how big the ordeal, the words were not broken. Bharat did not cross. Raja Janak did not come. None of the kingdoms interfered. Only Ramji and his Vanar Sena.
and ultimately the battle cannot be fought by anybody else. ये जो द्वंद है, that battle which is going on, nobody can help us to elevate, right? Our journey is towards the Lord, right? चाहे हम कुछ भी बोलें, आगे ना पीछे, हमें जाना तो उसी तरफ है. कई लोग मन से बढ़ने लग जाते हैं, कई लोग धक्का खा के बढ़ते हैं, कई लोग बढ़ते नहीं हैं तो जन्म जन्म लग जाते हैं. But the direction is liberation. Direction is knowing the self. Direction is moving forward. So just like Ramji was with his Vanar Sena, we are also with our thoughts only now. और क्या है हमारे पास में? हम हैं और हमारे विचार हैं. That is the battle that is going on. Nothing can be done. So Ramji is standing there. Current situation. Vibhishan gets what? He gets bothered. Out of love, he is concerned. He says, Ravan is equipped and you are not. And mostly so in this world, आप हमेशा देखिएगा, evil is more equipped than the good. We can't even think to that level. और evil क्या करके चला जाता है? कहते हैं ना कि भाई बहुत ध्यान से, with an evil minded, it is very difficult to fight. But Ramji over here is reminding us, just because somebody's attitude is bad, somebody's ways are bad, somebody is evil, we should not lose our virtues. We should not absorb the vices. कई बार होता है ना कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, लोहे को लोहा ही मारता है. ठीक है, but those are very different things. लोहे को लोहा मारता है, ठीक है, पर हम इंसान है ना, हम लोहा तो नहीं है. Why is it that we leave our good to counter somebody else's bad? कभी नहीं जीतेंगे. So over here in Vibhishan Gita, the emphasis is not on the vices. एक बार भी प्रभु श्री राम ने, we have been talking about the Vibhishan Gita for so long, तो कोशिश करके आज फटाफट उसको खत्म कर देंगे. But he has not even once mentioned any vice. उन्हें ये नहीं बोला कि रावण में ये vices हैं तो इससे ऐसे जीत सकते हैं. नहीं, उनने अपने opponent के vices देखे ही नहीं. He is talking about his own virtues. What are the virtues that I have? देखिए, we all have good and bad in us. हमारे में है, हम सब में दो पहलू हैं. We cannot deny it. कई लोग तो they go so far to say probably Ram and Ravan were, the depiction of the same coin with two sides. There are many narrations which have been done like that also. हम तो ये मान के नरेशन कर रहे हैं कि राम जी हमारे राजा थे एंड ये हमारा इतिहास है, राइट? पर when an artist starts narrating the Ramayana, many a times they feel कि maybe that was a battle between the good and the evil in one person. Yes, why not? And कहीं पे भी Ram ji never watered the evil. See, there are a lot of wolves, so many thoughts in our mind going on. किसको ताकत मिलेगी? जिसको हम खाना खिलाएंगे. Which plant will grow? The plant we water. Instead of thinking about, oh my God, I have such a bad temper, we can say, I have such a strong will. There is so much I have accomplished in life. I am calm in situations also. धीरे 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 the anger will wither away. But हम लोग क्या करते? I have to counter anger. I will not get angry. I'm not going to do this. I'm not going to shout. No. Ramji throughout Vibhishan Gita kept saying, I am contented, I have this strength, I have that strength, Sauraj, Dheeraj, ye, wo. He kept mentioning the positives in him, strengthening them. So in this new year, rather than watering the plant, which tells us कि नहीं थोड़ा गुस्सा आ जाता है, थोड़ी पेशेंस कम हो जाती है, थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा वो हो जाता है, let's take a piece of paper. हम बहुत दुनिया एनालाइज करते हैं ना. We listen to the news, we analyze the world. We listen to people, we analyze the other person. We listen to gossip, we analyze the other household. In that process, we get so busy, हम 5 मिनट भी self analysis में नहीं देते. Right?
So maybe this week, let's do the SWOT analysis. It's very famous in marketing, which is done for a lot of companies and products. But we are also a product of God, right? We are the most important product for ourselves. So strength हमारी क्या है, weakness हमारी क्या है, हमारे पास में क्या opportunities हैं, and what are the threats that we are facing. Strength, weakness, opportunity, threat. किसको हम एनालाइज कर रहे हैं? खुद को. It's the beginning of the year. New beginnings, right? बीत गई सो बात गई, कल गया खत्म हो गया. अब मैं नए सिरे से आगे बढ़ रही हूं, तो मुझे मेरी ताकत का पता होना चाहिए, मेरी कमजोरियों का भी पता होना चाहिए, राइट? एंड मेरे आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एंड व्हाट आर द थ्रेट्स, जिससे मुझे दूर रहना है, मुझे बचना है. माइंडफुली इफ वी एंटर दिस ईयर, we'll do a lot of good. So Sri Ram is very well versed about his strengths. So when Vibhishan says, he is pointing out the weaknesses, right? He is saying कवच नहीं है, he is saying पद में पादुका नहीं है, he is saying आपके पास में रथ नहीं है, he is saying आपके पास में उस तरह की weaponry नहीं है, you don't have the weapons that Ravan has, and you have been on कंदमूल फल, you are undernourished. कैसे लड़ोगे उससे? Right? He has everything that you don't have. So at that time, when somebody is pointing that to us, we should know what we have, right? So that we can stand and say, नहीं, हाँ, आपको जो कुछ दिख रहा है वो नहीं है शायद मेरे पास में, पर मेरे पास में इतना कुछ है that nobody can defeat me. And आज की तारीख में तो हमारे साथ में राम का नाम है. So no turbulence can ever shake us. है ना? जब राम का नाम है तो फिर डर किस बात का? एंड हनुमान जी जैसे गुरु हैं, कैसे हमने, बिकॉज एवरी टाइम वी चैंट दी हनुमान चालीसा वी से दिस, राइट? कृपा करो गुरुदेव की नाई. हनुमान जी आप हम पे कृपा करिए हमारे गुरु के जैसे. आप हमारे गुरु हैं. जिसका गुरु हनुमान है उसको क्या किसी चीज से डर लगना चाहिए? If we truly believe that when we say Ram, when we open the Ramayan, हनुमान जी साक्षात आके वहां विराजमान हो जाते हैं, तो फिर किस बात का डर? We know, right? He has the Vardhan of multiple bodies. When Ramji was going to Vaikunt Dham, when his work was done over here, कहते हैं ना कि the entire Ayodhya, the trees and the plants and the birds, even the creepers and the crawlies, all the worms, everything that we see today is not from then. वो सब सरयू में समा गई. Because at that time when Sri Ram had taken avatar, even the trees and the bees and the beetles, they were all different divine entities who had come down and taken that form. Shankha, Chakra, Gada, Padma bhi the wohi. So when Sri Ram entered the Saryu, everything went with him. It is the new Ayodhya that we see today. But who was left behind? Hanuman. Hanuman ने बोला कि जब सबको ले जा रहे हो तो मुझे क्यों छोड़े जा रहे हो भाई? उनको यही लगा ना कि मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? What have I done wrong? You're taking everybody and leaving me behind. So then he went crying to his mother. See, it is very easy, right? वो राम जी से तो इतनी बहस कर नहीं सकते थे. रोते रोते माँ सीता के पास पहुंच गए. So then they tried to explain and he said, okay, then I want to have a vardhan कि I should be there present whenever somebody says Ram from the bottom of their heart. Me as this, with this physical body should be present there. So माँ सीता, mothers, right? They melt. हाँ, ठीक है. And the father, he said, logically think, what is he asking for? He is asking for multiple bodies. अनगिनत शरीर की मांग कर रहा है ये. तो माँ सीता ने बोला, दे दो ना. आपके नाम और आपके भक्तों की सेवा के लिए तो ये बोल रहे हैं कि मुझे अनगिनत शरीर चाहिए. जहां राम का कीर्तन होगा वहां मैं पहुंच जाऊंगा. जहां हरि नाम होगा वहां मैं बैठूंगा और मेरे प्रभु को याद करूंगा. तो ये क्या मांग रहा है? And then he was given this. So today as we talk, he is seated here. We can't see him with these physical eyes, but we can't see a lot of things with these physical eyes, right? We don't see with our eyes, we see with our heart. I think we should all by now know कि दृष्टि में तो बहुत खोट होता है.
है ना, हम दिल से देखते हैं, दृष्टि से नहीं. एंड शायद कहीं ना कहीं वी हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि हमें हनुमान दिख जाए. जिस दिन दिस एग्जिस्टेंस ऑफ श्री हनुमान becomes a staring reality accepted by every pore of our body, उनको वो हमें दिखने लगेंगे. इज ए चिरंजीवी, राइट. पर कहीं ना कहीं वी हैव अ डाउट, राइट. तो when he is present, what is the fear? And when we know this, let's with this thought, with his strength, with Ram Naam, make the most of our strengths, work on our weakness, get the opportunity to serve, and stay away from the threats which take us away from our path. रोज बैठ के खुद पर काम करिए. I think that is the most important thing that we can do. Work on ourselves. हम बदलेंगे तो दुनिया आप बदल जाएगी, राइट. हमें दुनिया को बदलने जाना नहीं है. खुद बदलिए, दुनिया बदल जाएगी. तो over here, what is he saying? We'll just go through this paragraph. रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भय संदेहा, बंदी चरण कहा सहित स्नेहा, नाथ नरत नहीं तन पत्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना. So in the darkest of moments, I think this Vibhishan Gita is enough to give us strength, right? सुबह उठ के हमें ये चैंट करना चाहिए, पूरे दिन शक्ति मिलेगी. एंड सुनो सखा कह कृपा निदाना. देन राम सेज, माय डियर फ्रेंड, लिसन. जय ही जय होए सो स्यंदन आना. जय जिस चीज से होती है विच इज नॉट टेंजिबल, इट इज नॉट फिजिकल. देखिए, दो लोगों के पास में सेम चीजें होती हैं, पर रिजल्ट्स अलग अलग कैसे आते हैं? इन्हीं चीजों से. सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका. सत्य और शील, बल विवेक दम परहित घोड़े. बल विवेक दम और परहित घोड़े हैं. क्षमा कृपा समता रजु जोड़े. क्षमा कृपा समता रजु जोड़े. ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना. दान परशु बुद्धि, दान परशु बुद्धि, संति शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा. अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सीली मुख नाना. कवच अवेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा. सखा धर्म रथ धर्ममय, अस रथ जाके, जीत कहा न कतहु रिपु ताके. बोलने के जिसके पास में ऐसा रथ है, जिसके पास में ये वेपनरी है, कैन ही एवर बी डिफीटेड बाय एनीबडी? देखिए, एंड डिफीट इज ऑल्सो विद इन. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, राइट. Nobody else defeats us. It is nobody else. It is our own belief in ourselves that shakes and we get defeated. And the person who is willing to try and try and try again, get up 1,000,000 times, never fails. So with this thought, let's enter. हम लोगों ने क्या कर रखा था? I think we did ईश भजनु सारथी सुजाना. Then we went down to Kavach Abhed Vipra Guru Puja. In that we had talked about the 24 gurus. We had started that, and we had brought to the knowledge that gurus come in various forms. We can learn from anything and everything. अगर हम सीखना चाहें तो एक पत्थर भी हमें सिखा सकता है. And conclusion, Deepa had brought forward a very beautiful point. Everybody had brought forward lovely points. But this point stayed with me. Ki if a paper is dipped into water, right? It crumbles and melts and dissolves. But if we layer it with a protective layer, be it Vaseline or some
plastic or something that is protecting the paper, even if we leave it in water, nothing would happen, right? It would not crumble. So Guru is that protective layer. Guru can be a Granth, Guru can be a thing, Guru can be our children, Guru can be the spiritual gurus. But having a Guru is essential to protect us from crumbling and dissolving into Maya. So with this thought, we had left the session and हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. And I somehow don't remember whether we had done Virati Charam Santosh Kripana. So we'll start with Virati, right? We'll briefly take it. Virati. Virati is dispassion. It is Doha number Ish Bhajanu Sarati Sujana. And उसके बाद में after Doha number 79, it is the third chaupai. Virati Charam Santosh Kripana. So Virati is the shield. Dispassion, detachment. हम लोग बहुत interchangeably love and attachment use करते हैं, right? I love my child, I'm so attached to him. But we have time and again in the previous sessions also mentioned that attachment and love are not the same thing. Love without attachment is possible. But where there is too much of attachment, mera, 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 love vanishes. Expectations take form. Right? So over here बोल रहे हैं कि Virati is my shield. So a person who is dispassionate, who is detached, does not serve, does not love, does not care. ऐसा नहीं होता. हमें कई बार लगता है ना, if I become detached, how will I be a grihasti? If we are detached, we'll be beautiful grihastis because we will serve without expectations. We will not hold on. We'll let go, set everybody free. कहते हैं ना, let everybody be free. Serve without expectation. That comes only when virati, dispassion, detachment is there. Many of us are at the phase where our children are going or have gone. It will hurt when we feel that नहीं ये तो मेरा है, इसको मेरे पास होना चाहिए था. The child is through you. He or she is not yours. Right? They have their own journey. They found a conducive environment. They needed this environment for their spiritual upliftment. So they came. And when you have done your duty, let go. That does not mean we don't love, we don't care about it. But it only means that we will not crumble and break. जहाँ मेरा आता है ना, वहाँ दर्द आता है. And the story of the burning house, when a person is sitting in the cafe, he's listening to the news, a house is burning, he's still enjoying and talking and ordering and eating. But the minute he hears the name of the owner of that house, क्या होता है? पसीना आता है, खाना छूटता है, वो भागता है, रोने लग जाता है. बदला क्या? घर तो जल ही रहा था. Right? मेरा घर जल रहा था. मैं हटा दीजिए. विरति. मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है. कहते हैं ना, when we sing ओम जय जगदीश शहर, हम बहुत प्यार से गाते हैं. तेरा तुझको अर्पण कैसे भूल जाते हैं? क्या लागे मेरा? Nothing is ours. We came with nothing. We are going to go empty-handed. Virati, virati, virati. जो कुछ भी, we have gathered things on the way, right? And we leave everything when we go. This small span of time, जहाँ हमें लगने लगता है कि हमें हमारा है, वो बहुत छोटा है समय. हमारा कुछ नहीं है. And consciously, we have to build, we have to be in awareness, we have to tell ourselves, virati, virati, virati. Live detached from the world, attached to the Lord. Love without attachment. So, क्या है? राम जी is not fighting a battle where he is so... आप ये सोचिए, अगर उनमें विरति नहीं होती तो क्या वहां वो खड़े होते? अगर उनमें विरति नहीं होती तो he would not have been able to give 100% in the battle because it exhausts you. Attachment exhausts. Holding on, trying to just hold on to people कि ये मुझसे दूर ना जाए, ये मेरे पास ही रहे, ये मेरा है, इसको मेरा ही ध्यान देना चाहिए, मैंने इसके लिए इतना करा. It drains. It is like draining our energy.
बट जहां विरति होती है, डिटैचमेंट होता है, जहां होता है सब प्रभु कर रहे हैं, सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है, वहां शक्ति आती है बिकॉज देयर इज नो ड्रेनेज हैपनिंग. ड्रेनेज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ड्रेनेज ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ड्रेनेज ऑफ होल्डिंग ऑन. तो प्रभु में विरति है. आज मां सीता इज देयर. ही इज फाइटिंग द बैटल नॉट ओनली फॉर मां सीता. ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं. वी शुड रिमेंबर कि मां सीता तो वहां है ही नहीं. इन अरण्य कांड, नहीं, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड एंड किष्किंधा कांड में से when that deer came, before that माँ सीता and Ramji had a discussion. He said, सीते आपकी शक्ति इतनी है कि nobody can even look at you. So can you please get back, go enter the fire, leave your shadow behind so that this drama can unfold. Right? Everything is a drama. ताकि मैं रावण को मुक्ति दे सकूं. और आप अगर उधर जाएंगी, when you go there, I'll have a chance to come there. Otherwise, how many of their senas will come here? How many people will come here? I have to give liberation to the entire Rakshas Samaj. So you have to go there. So come to think of it, if we look at the nitty-gritties, वहां पे तो सीता माँ की shadow बैठी है. Ramji knows it. He is there to fight a dharma yuga. There is a cause bigger than Ma Sita which he is moving towards. Right? So Virati Charam, he's saying Virati is my shield. Dispassion. Detached. Yes, he knew कि अगर मैं यहां से गया, my father is not going to make it. राजा दशरथ में एक श्वास नहीं बचेगी. But ठीक है, नियति, if this is what is needed, this is what has to be done, it has to be done for the greater good, and he walked away. No smile, no tears. Situation is, that is what the situation demands, it should be done. So Virati gives us that strength. And Santosh. Contentment. We talk a lot about contentment. Ki Ma Lakshmi is contentment. Right? The person who is rich is not the person who has a lot. A person who is rich is the person who is contented with what he has. Does it slow down your approach? Does it slow down your working ability? Does it bring complacency? It does not. A contented person also does not have that leakage. He is contented, self-contented. जैसे प्रभु है ना, प्रभु is also contented. He is complete in himself. जो प्रभु ने दिया उसमें खुश, जो नहीं दिया उसमें खुश. What is the need? जो है, let's make the most of it. और जो नहीं है, ठीक है. So that is contentment. And what is he saying? Virati charam santosh kripana. Santosh is my sword. Santosh is a very big sword. Nobody can move a santoshi person. No agony or sorrow can touch him. No fear can come near him or her. That is the power of संतोष. संतोष कैसे आएगा? Again, राम नाम लेने से, when we understand the working of this world. There's a story that comes. I was just going through it and it's a very beautiful read. I don't know where I read it, somebody forwarded it. But there was this, I'm forgetting who did, but I think it was Purvaja if I'm not mistaken. किसी ने तो करा था. कि this person, he says the world is unreal, right? Everything is unreal. So he wandered around. कि सब कुछ छोड़ दिया मैंने, ये भी छोड़ दूंगा, वो भी छोड़ दूंगा, सब मिथ्या है, माया है. क्योंकि we keep saying it, ना? Everything is मिथ्या, everything is maya, nothing is real, this, that, everything. So he took it in the literal sense and left everything and wandered. And then he reached a sadhu. There are many sadhus sitting in the Himalayas, बैठे हैं वहाँ पे, तपस कर रहे हैं. And it is so beautiful कि even now, so many of them are doing tapasya that they are holding on to this world. नहीं तो ये सृष्टि कब की नष्ट हो चुकी होती. So he reached one. And when he reached, he started talking. He said, then when all this is maya, सब कुछ ही माया है, सब कुछ सब मिथ्या है, then what is real? क्या है?
So what the sadhu did is, I'm still cutting it very short. With his danda, he hit the knee of this person and he felt pain. He said, is the pain real? He said, yes, I felt it. It is real. Is the cold that you're feeling real? Yes. Are the clothes that you're wearing? Yes. Everything. तो बोला हाँ ऐसे तो existence लगती है. He went on to say, it is your approach to looking at things. That real, everything is. हो रहा है, tangible है. Right? दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. पर सब बदल रहा है, राइट? आज है, कल दूसरा है, कल तीसरा है. तो दैट इज व्हाट इट इज, द वर्ल्ड इज. बट दैट unchanging, unmoving entity which is watching all this, when you realize that everything is changing, everything is moving, everything is happening, but that one unchanging entity, you, which is just observing it, that shows the real difference between the real and the unreal. ऐसा नहीं कि सब है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे. Everything is changing. That which changes is the unreal we are talking about. That me who is watching myself being a 5-year-old and a 10-year-old and a 15-year-old, 20-year-old, 30-year-old, 50-year-old. Somebody who is watching. And that understanding कि things are happening, they are not happening to me, is the reality. Things are happening, they are not happening to me. I am there watching. बहुत फर्क है. हम लोग क्या सोचते हैं, things are happening to me. No, things are happening. And then contentment अपने आप आ जाता है. But अभ्यास, करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान. There is no shortcut to अभ्यास. And then comes दान. What is he saying? दान परशु. दान is my axe. हम लोग डर जाते हैं. We all become very scared, right? कि कितना दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. It's a big question mark, right? But ठीक है, दान is not only money. समय दान करिए, राइट? अन्न दान करिए, ज्ञान दान करिए, अभय दान करिए. Fearlessness is also something that we can give. The way we talk to people, the way when somebody has made a mistake, we handle a situation. Do we shout and make that person more fearsome? Or we say it's all right, हो जाता है, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना. What is our approach? The minute we say दान, the first thing that comes to our mind is money. छोड़ दीजिए पैसा, right? It is like, leave it. We'll say, no, it's necessary, we need it. Yes, we do. Lakshmi, earth is never considered wrong in Sanatan Dharma, right? And giving and what should we donate, what should we not donate is a different topic of discussion. But right now, in the beginning of the year, let's set money aside. छोड़ दीजिए. हम कितना कुछ और दान कर सकते हैं. समय दान कर सकते हैं, ज्ञान दान कर सकते हैं, अभय दान. When an animal is sleeping, when a cat is sleeping while we are walking, we can choose not to startle the cat, right? हम सोच सकते हैं कि ये सो रही है, अगर मैंने यहाँ पास से निकली है डर जाएगी, हम अपना रास्ता बदल सकते हैं ना. वो भी एक दान है, हमने अभय दान कर दिया. Why look at only the tangible element when it is coming to दान? So प्रभु बोल रहे, I have this acts of दान. श्वास श्वास से मैं दान करता हूं. And when he has this weapon, when he's talking about this kind of a weapon, he's saying, who's going to defeat me? And दान should be very humble. बार बार बोलते हैं, I think it is something we know all the time, we know it very well. But nowadays it has become a fashion statement to show कि this has been done, that has been done. सही दान गुप्त दान होता है. But then many people also say कि if it is not shown, how will you lead other people to do it? I do not know what is the right or the wrong way. But सही दान कहते हैं गुप्त दान होता है. Where your right hand also does not, left hand does not know when you give with your right hand. And
देयर इज नो ईगो इन यू, बिकॉज जब हमारा कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं आपकी चीज जब लेके, व्हेन यू हैव सेड कि प्लीज आई एम गिविंग दिस टू यू, गिव इट टू दैट पर्सन, व्हाई शुड देयर शुड बी एन अयोटा ऑफ ईगो इन मी? आपने दिया, मैंने पास ऑन कर दिया, राइट? हमारा तो कुछ है ही नहीं ना. आई थिंक वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट आर्स. नियति है, डेस्टिनी है, जो भी है हमारे पास में, टेक्स अ मिनट टू गो अवे. तो रहीम दास जी के बात करे बिना नहीं बढ़ सकते आगे. ही वॉज अ ग्रेट दानी एंड ही हैड अ ब्यूटिफुल वे ऑफ गिविंग चैरिटी, राइट? वो कहते हैं जब वो दान देते थे ना, तो वेन एवर ही वुड स्टार्ट गिविंग, उनकी नजरें नीचे हो जाती थी, जैसे कि उनको शर्म आ रही हो. ही वुड नॉट बी एबल टू लुक एट द पर्सन हु इज टेकिंग चैरिटी फ्रॉम हिम, राइट? इतनी शर्म नहीं. तो आजकल तो हम ऐसे देते हैं कि देखो हमने तुम्हें दिया. अरे भाई, ठाकुर जी ने दिया है तो दे पा रहे हैं. जिस दिन ले लिया उस दिन किसको क्या देंगे हम, सोचते रह जाएंगे, राइट? सोचिए ना, मतलब हमें तो और रहीम दास जी देते थे तो दिया और नजरें झुक जाती थी. ही वुड लिटरली श्रिंक इनटू हिमसेल्फ आफ्टर गिविंग चैरिटी. हमारी तो छाती चौड़ी हो जाती है, राइट? तो दिस बात स्प्रेड अक्रॉस, एंड तुलसी बाबा भी उसी समय थे. सो दिस बात, दिस थॉट एंड दीज वर्ड्स वेंट अक्रॉस कि रहीम बाबा फील्स वेरी एम्बेरस्ड व्हेन ही इज गिविंग चैरिटी. उनको शर्म आती है. तो तुलसी बाबा तो जानते थे कि ऐसी बात है नहीं, राइट? कई बार ना संसार को समझाना भी जरूरी नहीं होता. रहीम दास जी ने क्लैरिफिकेशन देना जरूरी नहीं समझा. We cannot clarify, give explanation for everything. It's not needed, right? And when something has to be clarified, it would be done if it needs to be. So ऐसी देनी देन जो चित सीखे हुसैन, कि आपने ऐसे दान देना कहाँ से सीखा? रहीम दास जी, तुलसी बाबा इज आसीन, जो जो कर ऊंचा करें तासो नीचे नैन. जैसे जैसे आप ऊंचा करते हैं हाथ देने के लिए, योर आईज नीचे हो जाती हैं शर्म से. तो ऐसे दान देना आपने कैसे सीखा? एंड टू रिप्लाई, एंड ही अंडरस्टूड, सो ही रिप्लाइड, देनहार कोई और है, भेजत है जो दिन रैन. देने वाला कोई और है जो दिन रात आपको दे रहा है. हमारे पास में एक पत्ता हिलाने की शक्ति तो है नहीं, राइट? एंड हम बोलते हैं इट इज माई हार्ड अर्नड मनी. हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं ना. धीरू भाई अंबानी तो हर कोई नहीं बनता ना, राइट? उनसे बहुत ज्यादा दिमाग वाले भी बहुत होंगे. ऐसा क्या है, क्या पता. देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करें तासों नीचे नैन. देना कोई और है, निमित्त हूं, पासिंग इट ऑन, बट पीपल स्टार्ट थैंकिंग मी, लुकिंग एट मी कि अरे तुमने दिया. तो शर्म आ जाती है, संकोच होता है, समझ नहीं आता कि शर्म से निगाहें झुक जाती हैं, क्योंकि देने वाला कोई और है, मैं नहीं. सो देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करें तासों नीचे रैन. He isn't the donor. There is somebody else who sends day and night. I am only a medium through which he channels his donations. So for those who don't understand this, which is most of us, will think of me as a donor, and this is why I feel ashamed while donating. So क्या है श्री राम का एक्ट्स क्या है? बोले इसमें लिखा है दान परशु. When he came from Lanka, when he came from Ayodhya, he did not store anything for later use. We store a lot of things. I do not know. Again, I'm not doubting it. That's why I said let's focus on other forms of daan this year, maybe. But when he was walking out of Ayodhya, he did not keep a single thing. Even the cloth that he was wearing, the jewelry that he was wearing, it was also donated. Everything was given away. Not a single thing he kept. And he walked. And he says that the ability to give, जो मेरा है ही नहीं, सबका ही है, सबको देने में क्या, is my strength.
देखिए प्रभु देता भी उसी को है ना जिसको आगे देना आता है. ऑलवेज रिमेंबर, जो दाता होता है ना, अ गिवर्स हैंड इज नेवर एम्प्टी. And we have seen time and again itihas, right? Why should we go all the way and talk about Ramcharitramanas, Ramayana and Ayodhya? In recent history also, and recent right now, last 2 weeks की unfolding में भी we know, राजा कब बंदी बन जाता है पता नहीं चलता, है ना? If we should be following news, you know, spirituality does not say that we should not know what is happening around us in the world. It takes a minute. 3 days back you are dancing. After 3 days you have been captured and taken to an other country. कौन क्या नहीं बचा पाए? कहते हैं ना अर्जुन का. I was sitting with my father the other day and he has said कि everything is destiny. गीता पढ़ो समझोगे. And why? वाकई गीता पढ़ते हैं तो समझ आता है कि हमारे हाथ में कुछ खास है नहीं, right? तो he said कि जब अर्जुन was in the युद्ध भूमि, when he was fighting the battle, right? And he was the victorious one, right? उन्होंने तो करण को भी हरा दिया. Yes, Shri Krishna, his buddhi was so strong that he chose Krishna over the other armies. That is also presence of mind. And Hari Kripa, कि we are able to choose God over everything else. वो आराम से नहीं होता. माया अगर हमारे सामने कि एक तराजू में प्रभु बैठे हैं, तेरे को रोटी भी नहीं दूंगा खाने के लिए, और दूसरे तराजू में सोना चांदी है, तो it requires a lot of courage and presence of mind to still choose the Lord and say it's okay, even while starving I choose you. नहीं तो हमें लगेगा ना ठीक है भगवान के पास बाद में चले जाएंगे, अभी सोना चांदी संभाल लेते हैं. खाने के लिए रोटी तो चाहिए ना, बातों से थोड़ी पेट भरता है. कई लोग बोल देते हैं कि भाई तुम बोलती बहुत हो पर बातों से पेट थोड़ी भरता है. पेट तो किसी भी चीज से नहीं भरता है, पेट तो भगवान ही भरता है. कितना ही सोना चांदी हो, जिस दिन जाना होगा एक झटके में चला जाएगा. सो अर्जुन, after the battle, everybody started saying, see, Arjun, his Gandiv, you know, his bow and arrow have so much strength that he won the battle. He chose, he made the right decisions. Krishna was with him, this, that, everything. And let's move forward. And then came the time when the war started. Shri Krishna ne bola, take all the gopis, right? Dwarka is going, it is under attack. Now you take all the gopis, make sure you protect them and run. Right? And you are the Gandivdhari, you won the battle of Mahabharat. तुम तो कर ही सकते हो ना, किससे बचाना है? काबा, those, you know, फॉरेस्ट में जो काबा है उन्हीं से तो बचाना है. तुम्हारा गांडीव तो कितना स्ट्रांग है. सब गोपियों को लेके अर्जुन आगे. And what happened? हाँ, इसका है ना समय पूरा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. टेंड टू फॉरगेट नाउअडेज. कितने कहते हैं कि वही अर्जुन वही बाण, काबा लूटे गोपिका, समय बड़न को होत है, ऐसे आता है. एंड जैसे काबा लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण. अर्जुन भी वही था, गांडीव भी वही था, उसने महाभारत का युद्ध जीता, और इधर काबा गोपिकाओं को लूट के चले गए, लेके चले गए. अर्जुन कुछ नहीं कर सका. जब भ्रम आए ना, तो दिस एग्जाम्पल, दिस स्टोरी, आई विल सेंड द फुल वर्स. वी शुड रिमेंबर, आज जो हमारे हाथ से हो रहा है, आज जो शब्द निकल रहे हैं, आज जिस स्थिति में हम हैं, प्रभु कृपा है, प्रभु की शक्ति है. दान भी अगर हम दे पा रहे हैं, हमारे बुद्धि वैसी चल रही है कि हमें दान देना है, तो भी वो प्रभु कृपा है. राइट? सो विद दिस थॉट दैट केम कि वही अर्जुन था, वही बाण था, पर कुछ नहीं. तो राम जी डिड नॉट होर्ड. राम जी लेफ्ट एवरीथिंग. ही सेड सब छोड़ के जाना है ना, सब छोड़ जाता. क्या गारंटी थी कि सब मिलेगा वापस? नहीं, सब दे के निकल गए. इसी के लिए तो वो राम थे. वो राम है, हम हैं, है ना. उनने अयोध्या छोड़ दी, सारा सिंहासन छोड़ दिया. अयोध्या थी, और हमसे हमारा घर नहीं छूटता, हमारी झूठी शान नहीं छूटती, है ना. हम अड़ जाते हैं अपने शब्दों पर. राइट? वी गेट सो हेल बेंट कि नो, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट. दिस इज व्हाट आई सेड, माय वर्ड्स. वी आर नॉट एबल टू टेक अनदर काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो कि नहीं हो सकता है, शायद ये सही हो. एंड राम सब छोड़ के
निकल पड़े. What was he wearing? A bark. It is said, now we see cloth. He was wearing a bark and he walked out. A bark around him. That is what makes faith. That is what gives strength. So बोल रहे हैं कि दान परशु है मेरा. ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं. बोले मैं सब छोड़ के निकल आया. एक बार भी सोचा नहीं. When we gift something to somebody and we are so conscious about it, हमने दे तो दिया, but how that person is using it, we want to watch it also. And if that person does not use it and he gives it to somebody else, we don't like it. मैंने तो इतने प्यार से दिया था, आपने किसी और को दे दिया. मैंने तो इतने प्यार से दिया था, आपने यूज ही नहीं किया. आपने दे दिया ना, खत्म. Still attached to the thing that we have given. And Ram ji, yes, कहते हैं ना, in a very beautiful adios amigos, मैं चला. ये होता है विश्वास. इस लेवल का विश्वास. तो राम जी बोलते हैं, अरे तुम क्या बात कर रहे हो विभीषण, मेरे पास में हथियार नहीं है. आई डोंट हैव वेपन्स यू आर टॉकिंग अबाउट. एंड ही हैज द मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट कहते हैं ना, द मोस्ट हाईटेक ऑफ वेपन्स राइट नाउ. द वेपनरी नाउ डेज वी टॉक अबाउट ऑल दिस इन द वर्ल्ड टुडे, राइट. क्या करें, बात करनी पड़ती है. ही सेज मेरे पास में, यू से वी डू नॉट हैव द अपडेटेड वेपन्स एंड द काइंड ऑफ थिंग्स. नो 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 नो. आपको पता है, wars are not won by weapons. Wars are not won by who's more powerful. Wars are not won by who spins in more money. इतिहास गवाह है. We have, if we look at through history and you look at the previous wars, wars are won by your heart and your courage. आप कभी देखना, talk about Vietnamese wars and all that had happened. क्या था उनके पास में? कुछ भी नहीं. जीत गए ना. It is you, not what you have. The minute we realize it is me, not what I have that makes me strong, our destiny will be different. पर आजकल हमने ना, from the very beginning, we have conditioned ourselves to say कि no, what I have makes me strong. No, I am strong, and that gives strength to what I have. Right? So over here, what is he saying? From when he's talking about weapons, he's saying Virati Charam. Virati is my shield. He says Santosh is my sword. Contentment is my sword. Dan is the axe that I'm holding. It is strong. Nothing can touch me. Who says I have no weapons? And then he says, he goes on to say, Buddhi Shakti Prachandar. और ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये मेरी शक्ति है. प्रचंड शक्ति. It is the missile. It is the BrahMos of today. That is what I have. It's my बुद्धि. देखिए, हमें लगता है ना कि हम, we really undermine our potential, you know, as humans. तो प्रभु बोल रहे हैं कि मेरी शक्ति है, मेरी बुद्धि. And what is बुद्धि? बुद्धि is the right understanding and knowledge. Monkey mind भी है यही. मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार is same. The composition is just the texture is a little different. बोलते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, एक ही चीज को अलग 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 बोल रहे हैं. तो ये बोल रहे हैं मेरी बुद्धि मेरी शक्ति है. हम क्या अपने मन को अपनी शक्ति बना सकते हैं? यस. अभी तो वो हावी हो जाता है हमारे ऊपर. When we tell him that no, I'll control you. This is how it's going to be. Buddhi, right understanding, if we can hone it. You know, there is a beautiful thing. We'll end with this. आपने कभी सोचा कि हम कई बार अपनी बुद्धि साइड में रख देते हैं? There is a very beautiful story that goes with the buddhi thing. कि there was this little boy who had seen his grandmother doing prayers, right? So when the grandmother would do prayers, आप सोचिए, what is the difference between बुद्धि होना और बुद्धि ना होना, right? So when he would see his grandmothers doing prayers, he focused on all that was being laid out, right? हम ऐसे ही तो सीखते हैं, घर में होता है तो बच्चे सीखते हैं. So everything was there, this was placed here, that was placed there, यहाँ पे ये रखा, वो रखा, सब करा, you know, सामग्री is there, where will be the direction of where we are sitting. And at that time, one thing that he always noticed was a black cat would be tied. है ना, काली बिल्ली को बांध देते थे. They had a black cat and it would be tied. So now this boy grew up watching this. Everything he absorbed, and he absorbed कि one black cat was always tied when the ritual was going on. Now it was his turn. His dadi ma went away, papa mummy went away. Now it was his turn to do the ritual.
He got everything in place. And at the last minute, he panicked. He panicked saying, I don't have a black cat. Go get a black cat. We have to tie the black cat. Unless and until we tie the black cat, we cannot do this ritual. Everything is in place. The Muhurat is coming. But they are not starting it because they are looking for the black cat. और वो pure black cat कहीं मिल ही नहीं रही है. They are running everywhere looking for the black cat. कुछ समझ नहीं आ रहा. Finally, an old man of his dadi's age came. What is the problem? Why are you looking for the black cat? Well, we cannot do this puja without the black cat. We always used to tie the black cat. He says, Muda, because you had a black cat and it would disturb the prayers, that is why you had to tie it and keep it in the corner. That black cat had nothing to do with this puja. हमने बुद्धि साइड में रख दी. Where is our बुद्धि? So this तो प्रभु बोल रहे हैं कि भाई मेरे में right knowledge है. Right? I am not going to chase and look for the black cat. बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, भगवान ने दी है. This is one of the unique, rare things that we have. Use it. Right? Don't chase that black cat. Always remember. And there is a beautiful analogy which I'll just read out. Reasoning. We have the capacity to reason, isn't it? हम हमारी reasoning ability भी छोड़ देते हैं कई बार. We don't reason. We don't think. बुद्धि is lying dormant, kept in a jar. Exercise the buddhi. So reasoning क्या है? If we think about it, buddhi, when Prabhu was talking about buddhi, he said, and we know Sri Ram के पास में है, is the capacity to consciously consciously making sense of things. ठीक है? Consciously making sense of things, applying logic, establishing and verifying facts, and changing and justifying practices. Right? The ability to reason. Institutions and belief based on new or existing information. That is the ability of reasoning that we have. And that is the beauty of Sanatan Dharma. Sanatan Dharma is a dharma that evolves. Right? It does not get stuck. हम अटक जाते हैं कई बार, but our dharma evolves. जो उस समय हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा है because the need of the time has changed. Things are moving on. So you move with the time. We don't get stuck to that black cat. Human reasoning. What is human reasoning now? Human reasoning is not simple, neat and impeccable. It is not a kind to a proof in logic, right? It draws no clear distinctions between deduction, induction and abduction. We can read more on it. I'll send it. Because it tends to exploit what we know. जो हमें पता है ना, उसी से हमारी reasoning बन जाती है. Reasoning is more a simulation of the world fleshed out with all our relevant knowledge. That is our human reasoning. अब इसको कैसे समझाएं? Very simple. There was a frog, right? He was in a well. And he thought this well is the world. It is the most beautiful place. There is nothing bigger than this source of water in which he has lived all his life. A lot of birds would come and tell him that there is a bigger source of water, multiple sources of water. There are rivers and lakes. And there is something called an ocean also. But he would not believe it. Because human reasoning. Right? And then of course, there was a crab also. बहुत सारी stories आती हैं. And then when he went out of that ocean and he saw, then he realized, कहते ना कुएं का मेंढक. तो प्रभु बोल रहे हैं बुद्धि का इस्तेमाल करिए. My strength is my buddhi. My strength is my reasoning. My strength is the knowledge. My strength is the information. The right knowledge. Don't get stuck. Expand. प्रभु ने ये दिया है तो इसका इस्तेमाल कीजिए. तो क्या बोल रहे हैं? He's saying buddhi. What is my strength? He's saying buddhi shakti prachanda. What is he saying? दान तो परशु है, पर ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये मेरा शक्ति है. प्रचंड शक्ति. It is my missile. जो दूर जाके भी मार सकती है. अभी तक he was talking about the weapons which are in his hand. If you noticed, the sword, the charm, there's a very beautiful progression that he's making. The sword, the axe, the shield. Now he talked about a missile that can be thrown. Right? So now my brain,
is that missile. My buddhi is that missile which I have. The right knowledge, the right understanding. Buddhi prachanda. Right? So with this, we will end the session for today. There's so much we had to cover, but next week we'll try to complete Vibhishan Gita. Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman.